Assalamu alaikum students. We are back with our economic lectures. We have to continue our lecture series in economy. So far we have dealt with most part of the national income accounting, and that caters to the needs of preliminary examination, as well as some topics were taken which would suit to the main examination as well. But today our topic would be slightly different. Our topic is going to be slightly different. It has both connotations for both preliminary as well as for mains. Corona has taught our economy so many things. We were not aware of so many things because we did not always find ourselves very much interested in either budget session or fiscal stimulus. But Corona made us to realize, since our shocks were from both sides, supply as well as demand shock. And we felt brunt of both shocks when there was a lockdown in most countries, and in countries like India, when a lockdown and most of the people are working in an unorganized sector, informal sector, and already we had been facing some cyclic and structural shocks in our economy. While we were in lockdown, it made us to concentrate on some facets of the economy where we try to assess or gain understanding of some of the perspectives of economy, or we try to compare various economies. और हमने इस बात पे ज़्यादा ही अपने आप पे ध्यान दिया कि गवर्नमेंट, सरकार इस आपातकालीन में, इस कोरोना की सिचुएशन में हमारे साथ क्या, हाउ इज गवर्नमेंट डीलिंग विद दिस सिचुएशन, हाउ जब सब कुछ बंद हो गया, जब लॉकडाउन बहुत उसने हमारे एम्प्लॉयमेंट को भी ये किया, affect kiya. We suffered a lot on various fronts. In those situations, it's the government which is the savior of every citizen. तो उसी हम एक स्टेप पे, और हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम भी था, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम भी था, हमने न्यूज़ भी अच्छी खासी से न्यूज़पेपर में भी अच्छा टाइम गुजारा, और न्यूज़पेपर में भी जब अच्छा टाइम गुजारा तो हम आए दिन ये देखते थे गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया, ये स्टेप लिया, ये स्टेप लिया, ये स्टेप लिया. But while government took many of the steps, but still our prejudice or our criticism against the government was unending, because we felt that we were not given sufficient enough. The requirement is too much that we have been given. इससे बहुत ज़्यादा हमारी requirement है. And one of the debates that started in USA, that when USA tried to give a trigger to its economy by giving it as a fiscal stimulus, the debate among the various economists, civil societies, the debate started. And what was that debate? How much fiscal stimulus is too much? Debate was around how much fiscal stimulus is too much. Obviously, you will be surprised by this term fiscal stimulus. अभी आपको इतना पता नहीं है, अभी आप लेमैन टर्म में इतना याद रखेंगे कि गवर्नमेंट कितनी मदद कर रही है हमारे, तो उसी को हम बोलेंगे फिस्कल स्टिमुलस. हाउ मच फिजिकल स्टिमुलस इज टू मच. ये एक डिबेट स्टार्ट हो गया. क्या हो गया? डिबेट स्टार्ट हो गया. जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी यहाँ फिजिकल स्टिमुलस थ्रू आत्मनिर्भर प्रोग्राम स्टार्ट किया था, तो हमने भी यहाँ, इज दिस इनफ? Is this the government, is the fiscal stimulus that has been provided by the government, is this enough? If government spends this percentage of GDP on as a fiscal stimulus to help people to come out of this situation, glaring situation, तो हमने ये डिबेट, क्या हमारे इतना ही गवर्नमेंट कर सकती थी? तो ये डिबेट आम हो गया. मगर कभी भी हमने इस बात पे गौर नहीं किया कि हमारा जो एक्चुअल जीडीपी है
वो कुछ और है, और जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी कंट्री इस लेवल पे ग्रो करेगी वो कुछ और है। तो लोगों ने इस डिबेट को आगे डिफ्रैगमेंट किया, फ्रेगमेंटेशन की इस डिबेट की। तो वहाँ जाके हमने दो चीज़ों को एनालाइज करना सीखा। तो दो चीज़ें हमारे पास जो मौजूद हमारे पास आई, वन वाज व्हाट्स आवर एक्चुअल जीडीपी, अदर वाज पोटेंशियल जीडीपी। क्योंकि एक्चुअल जीडीपी के हिसाब से गवर्नमेंट ने अपने अपने हिसाब से उस कुछ परसेंटेज फिस्कल स्टिमुलस में कंट्रीब्यूट किया, ठीक। हाँ, सम परसेंटेज ऑफ जीडीपी वाज स्पेंट एज ए फिस्कल स्टिमुलस, ठीक। तो मगर लोगों की एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा थी। जब लोगों की भी एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही थी तो हमें एक डिबेट, क्या हमारे पास इससे ज़्यादा होना चाहिए, इतना इस स्टिमुलस से हमारे पास ज़्यादा ही होना चाहिए। तो हमारे पास हमने देखा इकोनॉमिस्ट ने इस पर एनालिसिस स्टार्ट की और वो हमारे पास एज ए डिबेट हमारे पास आया, दैट इज डिबेट between actual GDP and potential GDP. Now, we'll go through these terms one by one, और हम बिल्कुल आसान सी ज़बान में ल्यूसिड तरीके से इसको सीखने की भरपूर कोशिश करेंगे। We'll try our best to understand in a full perspective. And believe me, this is a question which is very much important as far as your mains as well as preliminary is concerned. Though a question in 2020 was asked on potential GDP, but this can be asked again and in other perspective. But question on preliminary has not been asked, and we have a lot of information here that can be asked as a preliminary question. So do not shy away from these debates. Try to learn about these debates because these are very important economic debates, both in our country like India and in developed nations like USA as well. So should we start? National income accounting. Which lecture is it? Lecture? Sixth. You check it, please. No, it's sixth. Check it out. Check YouTube channel. I might have written there. Did you check it? Six. Huh? It is lecture 6. Now, we'll start this debate, or we'll start this lecture through a simple diagram. Suppose this is some spherical bowl that's in front of us. What will this if it is a state of our economy, अगर ये हमारी economic state है, what would in terms of GDP ये क्या reflect करेगी? Sorry, it would be potential GDP. What would be it? कि हम
इस लेवल पे ग्रो कर सकते हैं जो हमारी स्टेट में बेस्ड ऑन नेचुरल रिसोर्स, बेस्ड ऑन ग्रोथ, हम हमारा पोटेंशियल जीडीपी का ये बन सकता है। बट जो एक्चुअल में हमारे जीडीपी रियल जब कैलकुलेशन हम करते हैं वो पूरा उस लेवल पे नहीं आता है, बल्कि इससे कुछ कम होता है। सपोज वो आप ये मान, ठीक है, दिस वुड बी आवर एक्चुअल जीडीपी। नाउ और जो इन दोनों के बीच में ये गैप बन रही है, ठीक, जो इन दोनों के बीच में ये गैप बन रही है, इसको क्या बोलेंगे? हाँ, इट इज आउटपुट गैप। और ये आउटपुट गैप आपके लिए समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ माई लेक्चर आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस। इसी को रिवॉल्व, इसी को सोर्स बना के मैं बनाऊंगा, ठीक है। दोनों के बीच की डिफरेंस क्या कहलाएगी? ठीक, अब जानते हैं, ठीक है। अगर जो हमारी इकोनॉमी है, जब हमने स्टार्ट किया था लेक्चर, आज से नहीं, जो पहला लेक्चर जब हम जीडीपी पे बात कर रहे हैं, तो हमने बोला कि व्हेन वी ट्राई टू कंपेयर वेरियस इकोनॉमीज, वी ट्राई टू मेजर देयर GDP, and GDP represents actual health of our actual economic health of our country, ठीक। But how do countries know what to compare this GDP to? ये हमारे पास सवाल है ना। अगर हम सिर्फ एक्चुअल टर्म्स की ही बात करें, एक्चुअल टर्म्स की ही बात करें, तो हम बोलेंगे हमारा एक्चुअल जीडीपी, हमारा जीडीपी ये है। मगर क्या इतना जीडीपी सफिशिएंट है या नहीं है, तो इसके लिए भी एक कंपैरिजन होना चाहिए ना। तो उस कंपैरिजन के लिए हमारे पास क्या आया? पोटेंशियल जीडीपी। समझ आया कि हम कंसेप्ट्स पे क्यों जा रहे हैं? तो इम्पोर्टेंट है। तो ये नाउ बेस्ड ऑन द डेफिनेशन, एक्चुअल जीडीपी की डेफिनेशन हमें बिल्कुल सबको अभी पता है, हाँ। मगर जब हम पोटेंशियल जीडीपी की बात करेंगे, तो अगर आपको वो डिफाइन करना होगा, तो वो डेफिनेशन आप बता दीजिए। सिंपली इस पोटेंशियल मीन्स आप जो भी आपके पास नॉलेज है, उसी नॉलेज को यूज कीजिए। व्हाट इज दैट नॉलेज अबाउट? Monetary output and supply that a country can achieve. It That is is best. अगर हम पोटेंशियल, यस, वही डेफिनेशन है, आप थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। इट अटेम्प्ट्स टू एस्टिमेट हाईएस्ट output. OP means output, huh? It's often used in computers, but I'm using it in an economy. Company, country can sustain. Sustenance is very important. It's not only about achieving. Sometimes you can grow by a lot of numbers, but that will be for a minuscule of time. How is it that important? Sustenance is very important. Can sustain over a period of means, rather than capturing a current objective of nation's economic activity, it tries to, what does it try to? It tries to estimate highest output a country can achieve, ठीक।
Please go through this definition again. I give you 2 to 3 seconds. आज भी नहीं आया. आ जाओ मत डरो. बैंक प्रॉब्लम नहीं. मेरे मंदिर में गॉड ना से आप कैसे किसी सब्जेक्ट में. Einzelkäppel. Und so sieht die aus. Kann auch nicht da. ठीक है? ये समझ आए? But while understanding definition, यहाँ दो चीजें कुछ चीजें को assume important करना होता है और वहीं से आपके questions pick हो सकते हैं. जब आप बोलेंगे a country we are trying to see the highest output of a country, highest income of a country, means उस वक्त क्या होगा? What would be a demand and supply gap? Minimum. क्यों? Because aggregate demand will equal to aggregate supply. Means जितनी भी उस country में demand होगी वो cater होगी. इसमें हम देखेंगे क्या क्या assumptions ले गए हैं. Please understand this concept very well. I have a full intuition that this you might see in any other papers, whether mains or in preliminary examination. ठीक है? Assumptions अगर हम बात करेंगे, one is sustainability, means economy is performing very well over a period of time. ठीक? It's not operating well on for a minuscule amount of time, but over a period of time. ठीक? दूसरी बात that would be important. Aggregate supply. Aggregate demand does not exceed aggregate supply. Sorry. Does not. Why would that? Please understand. Does not exceed. I will make you understand. Do not confuse yourself. Does not exceed, okay. Does not exceed. Because you are already comparing the highest. What can it do afterwards? हाँ? इसके बाद ये कुछ कर ही नहीं सकती है. तमाम लोग जितने भी डिमांड कर रहे हैं वो फुल हो रहे हैं. तो obviously एक्स्ट्रा डिमांड तो नहीं होगी ना. उतनी डिमांड होगी ना जितने लोग होंगे, जितने लोगों की नीड होगी. एग्रीगेट सप्लाई. ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है. प्लीज इसमें आपको इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट्स भी नजर आएंगे. उस लेवल पे आप नहीं जाओगे. मे बी यू मे गो, अगर आप सेल्फ रीडिंग करेंगे, ऊपर की डेफिनेशन पढ़ेंगे, मगर क्वेश्चन यूपीएससी इतना बेवकूफ तो नहीं है. वो ऊपर की सतह पे क्वेश्चन उठाएगा. वो आपको इसको नीचे चीर मरोड़ कर वो निकालता है क्वेश्चन. ठीक है? और तीसरी, इकोनॉमी हैज अचीव्ड इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट. ये पॉइंट तो समझ आया होगा. बिकॉज जब फुल एम्प्लॉयमेंट होगी, लेबर फोर्स सारा जितना भी वो कंज्यूम होगा किसमें, ऑलरेडी एम्प्लॉयड होगी. जितने एम्प्लॉयमेंट जो क्योंकि सारे लोग एम्प्लॉय होंगे तो सबकी डिमांड जो होगी, मतलब सब कुछ डिमांड करेंगे, उस डिमांड को बराबर उतनी सप्लाई मिलती है जितनी डिमांड आ जाती है. आया समझ? इतना मुझे पता है आपको समझ आया होगा, बिकॉज आपके कॉन्सेप्ट्स ठीक है. अपने वो परसों ही समझा था कि जब हमने वेज पे ध्यान दिया था, हमने बोला इट्स नॉट ए दिहाड़ी, इट इज वेज मीन्स योर सैलरी एज वेल. वेज डज नॉट ओनली मीन द अमाउंट यू पे फॉर ए लेबर,
It means salary class. In economy we refer it via wage. ठीक ठीक इतना समझ आया? Now we know that every economy has its certain natural limits. It may not go to a potential GDP. It may not achieve potential GDP. Why? Because every economy has certain natural limits, and those natural limits are defined. Go to the first lecture of our series when we said that it is your labor force, it's your natural resources, it's your factors of production that determine the overall output in an economy. Means flow of production. We have a limitation in our flow of production. When we have a limitation in our flow of production, means we may not be able to achieve this potential GDP. That means every economy here has a certain limitation, natural limitation, which it cannot exceed. That's why it's not able to achieve potential GDP. समझ आया? Huh? We have already said in our first lecture that GDP is what does it signify? It signifies the essence of flow of production. ठीक? Does it? And that flow of production suffers from certain limitations. And when that first step suffers from flow of production, limitation, will a country be able to achieve potential GDP? Not easily, because we have a limitation from factors of production. Means each and every country, be it USA, be it India, be it any country, for God's sake, तो हर किसी के पास एक नेचुरल लिमिटेशन रह ही जाती है. तो इसकी वजह से वो पोटेंशियल जीडीपी को हासिल नहीं कर सकती. सर हमारा इतना ही मकसद था इस लेक्चर को पढ़ने के लिए? नहीं बेटा, इतना ही नहीं. नाउ a crux or cream is coming. Now we are going to dig deep into the topic. हम थोड़ा बहुत बेटर एनालिसिस करेंगे यहाँ से. ठीक है? Because we'll be asking ourselves a question. 2 questions we have to ask ourselves. यहाँ तक आया समझ? Yes, sir. Two questions we have to ask ourselves. One will say from left, other will be from here. First question we have to ask: what does potential GDP reveal about health of economy? What does it reveal? ठीक? सर पढ़ते ही क्यों है? वहाँ पे हमें किस बहस में ले गए? हमें तो इतना पढ़ना ही नहीं था, मगर जहाँ जाके आपको समझ आएगा हमें पढ़ना क्यों था. What does potential GDP reveal about health of economy? ठीक? समझ आया? Now, first time when we started the lecture, I told you, please remember the term output gap. Huh? No. First thing, there will be case 1. अगर मैं तेज जाऊंगा तो उसी वक्त बोल. ठीक? हाँ? Output gap is negative. आप कोर इकोनॉमी में जा रहे हैं. आपकी इकोनॉमी आई एम श्योर एग्जाम में फाड़ देगी पेपर्स को, इंसानों को नहीं. ठीक है?
इस लेवल पे आप, आई एम नॉट बूस्टिंग अबाउट इट, इस लेवल पे क्लासरूम स्टडी में नहीं जाते। If output gap is negative, what does this mean? No, it means actual GDP falls short of potential GDP. We are not producing that much of output. Output gap, we have a lot of gap. Output gap is whatever. Potential actual GDP minus potential GDP. Remember, it's not like, don't compare in that circle. Compare it like this, shortfalling gap. ठीक? Shortfalling gap means actual GDP, that is real GDP. Is short of potential GDP. Correct? Huh? Correct? Now, यहाँ से आप खुद दिमाग लड़ाओ, जितनी भी आपको इकोनॉमी पता है, जब रियल जीडीपी कम है पोटेंशियल जीडीपी से, मीन्स demand, we have not achieved potential GDP. Demand for goods and services is weak. Is it weak? यहाँ जाके यूपीएससी के सवाल है, वो आपको ऊपर बोलेगा, a country has not achieved, the output gap in a country is negative. Which of the following statements are correct in that reference? फिर जाके यहाँ आपको statements देखनी है, ठीक है? समझ आया? Demand for goods and services is weaker. Is it? हाँ? Confusion है? We can go. I can make you again understand. Confusion है? When weaker, go means दूसरी बात, दूसरी चीज, economy is not working or may not be at its full employment. Economy is or may not be ठीक है। और चकरा, अभी आप चकरा जाओगे जब डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज वीक, फॉर मैच आवर सिचुएशन with the first statement I made in a class, that is how much stimulus is too much, means government would be necessary. जैसे कोरोना में हुआ था, डिमांड ही नहीं थी तो गवर्नमेंट को स्टिमुलस देना पड़ा कि नहीं? देखो, कोई भी इकोनॉमी में कोई भी चीज आइसोलेटेड नहीं होती है, सब चीजें कनेक्टेड होती है। तो यही देखो, तो गवर्नमेंट को इसको स्टिमुलेट करना पड़ा, इकोनॉमी को। क्यों स्टिमुलेट करना पड़ा? बिकॉज वी आर नॉट मैचिंग आवर पोटेंशियल जीडीपी। ठीक, तो व्हाट कैन गवर्नमेंट, तो यहाँ क्या कर सकती है गवर्नमेंट? दो चीजें हो सकती है। गवर्नमेंट कर सकती है फिस्कल स्टिमुलस, दे सकती है। अपना मेंस का आंसर बनाना सीखो। स्ट्रक्चर वो नहीं होता है साफ डायग्राम, दैट्स नॉट अ स्ट्रक्चर, दैट्स अ मिथ। डायग्राम होना, साफ लिखना, ये लिखना, दैट्स अ मिथ। योर कंटेंट इज किंग, रिमेंबर दिस पॉइंट, कंटेंट इज किंग। जो हकीकी मानों में इवैल्यूएटर होता है वो कंटेंट के पीछे जाता है, ठीक है? कंटेंट, रिमेंबर दीज आर गोल्डन वर्ड्स, कंटेंट इज किंग। इन यूपीएससी, इन जेकेपीएससी, कंटेंट इज किंग।
ठीक, गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा? फिस्कल स्टिमुलस. व्हाट विल आरबीआई डू? देखो हर किसी लिहाज से मैं दे रहा हूँ. फिस्कल पॉलिसी क्या होगी, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगी, तो दोनों मिलेगा. आरबी, यस, वेरी नाइस, एब्सोल्युटली ग्रेट, एब्सोल्युटली very nice. This is how you understand economy. RBI will lower its interest rates. जब ये ऑप्शन अब चारों की चारों स्टेटमेंट्स होंगी, आप लिखेंगे 1 2 3 4 करेक्ट, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट. ठीक, मेंस के लिए भी आपके पास आंसर मटेरियल तैयार हो रहा है, और साथ ही में किसके लिए हो रहा है? प्रीलिम्स के लिए भी. ठीक, नाउ विल गो टू केस 2. इसको मैं रब करूं. देखो कुछ ही पॉइंट्स को मैं रब करूंगा. यहां नेगेटिव को मैं रब करूंगा. यहां क्या होगा? अब पॉजिटिव. जीरो इकोनॉमिक की बात ही नहीं करेंगे. पॉजिटिव एंड एक्चुअल जीडीपी ठीक, एक्चुअल शॉर्ट नहीं है, इट इज एक्चुअली परफॉर्मिंग. एक्चुअल जीडीपी इज वेरी क्लोज और इक्वल टू is close or equal to potential GDP. What would it mean? Demands for goods and services is weaker. No, demand would be outstripping supply. होगा ना? Because economy is producing above its national limits. Aggregate demand is outstripping aggregate supply. समझ आया? समझ आया? Demand is greater than exceeds. It is because our economy is doing very nice. What is? Because it is our output gap is positive. But we don't have point about assumption. See. I was knowing. Please note it down. It's output gap. I said there as potential GDP. And output gap, when I said output, it's a real actual GDP minus potential GDP. Means when it comes positive, our actual GDP has gone beyond our potential. Natural limits को भी आगे cross कर गया वो. समझ आया? हाँ? Assumptions were about potential GDP. Okay. We were talking that aggregate demand doesn't exceed. It's supply. Here we are saying output gap is positive. When I said output gap is positive, actual GDP is greater than potential GDP. Means we have exceeded our natural limits. There are no natural limits now. ठीक? Demand for goods and services will outstrip supply. Correct? Economy at full employment. Economy is performing at full employment. ठीक है? Is full employed. ये भी हो गया. अब उल्टा. अब यहां जाके क्या होगा? आप सर ये तो हमारे लिए विन विन सिचुएशन है. अरे अभी खाक विन विन सिचुएशन है, तो फिर तो हम कोशिश करते हैं हमेशा इसी सिचुएशन में आने की. तो सर आप क्या हमें बता रहे हैं? आप हमें धोखा दे रहे हैं. आप तो बोल रहे हैं कि हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि हमें इस लेवल पे आना है. मैं बता रहा हूँ बच्चा, इस लेवल पे जब आओगे कुछ और खामियाजा भुगतना पड़ेगा. क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपको यहाँ ही बताना है. जब डिमांड गुड्स और सर्विसेज की ज़्यादा होगी सप्लाई से, व्हाट इट विल कैटर टू? It will cater to supply deficit. And when there is a shock in supply, what does that mean? It is demand is more, supply is short.
price level of goods and services will go higher, and that means inflation. और यूएसए ने यही आंसर बताया कि हम इससे ज्यादा दे सकते थे, बट दिस विल अमाउंट टू एन इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी. तो आया समझ, गवर्नमेंट अगर उसके पास पैसे होंगे भी तो वो एक पर्टिकुलर पैकेज का स्टिमुलस देती है, एक्सीड क्यों नहीं करती. तो गवर्नमेंट को हमेशा आप मेहरबानी करके प्रॉपर इकोनॉमी को समझ के बगैर आप हमेशा उसको क्रिटिसाइज ना करें. दिस वुड बी माय पर्सनल सजेशन. ठीक, यहां क्या होगा, इन्फ्लेशन राइज. आई थिंक यहां तक आपको टॉपिक समझ आया होगा. टुमारो RBI, you can do that. When inflation will rise, naturally you will feel yourself what will RBI try to. It will suck money out of supply. It will increase interest rates. ठीक, that you are going to understand full-fledged in monetary policy. No stone will be left unturned. ठीक है, no peak will be left untracked. We'll try to be Dutch. We'll try to conquer most of the peaks. We'll try to track all the peaks, especially in Kashmir. We'll try to be those Dutch people. See, so tomorrow we'll continue with this topic. We were late today. We had to cut short of this topic, but tomorrow we'll continue where we left, and we will see the impediments that we see in India. ठीक? Thank you all. Allah.